Hello everyone, welcome to Maneuver TISNET 2020-23 guys general awareness series. So this is the part 10 and as you know, so continue I'm uploading the different part related to the general awareness section. It means which one is the most important for you. So in previous series, previous part, I already given the important information related to the award section, monthly current affairs and census 2011 and it means whatever the area which is important for the test exam. So this is the part 10 and in this part we will discuss about the September month most expected question. It means related to the international, national, government, award, obituary. So which one is the expected news, so that's I will cover here guys. So if you are targeting the test 2023 and seriously preparing, so here you can inquire. We started the batch, specific dedicated batch for test preparation, so you will get the live class and classroom for both. You can inquire, and in these program you will get the ebooks, books, shortcut method, doubt classes, recorded video, test, topic wise test which is very important to improve your score, mock test, full length mock test to feel the actual feel like the actual exam, WhatsApp group for doubt clarification, and 10,000 plus related questions. Mentor will guide you in a right way how to prepare for the exam. So if you are targeting the Mumbai, Guwahati, Tuljapur, Hyderabad, any campuses of the TIS for a different program. So guys, if you are looking for the classroom program, and if you are a Mumbai based, so Dadar, Borivali and Vasai, and for online program you can call on this number 8828581455, or you can visit on our website. So okay, so these all are the information for your preparations and planning. Now come to the current affairs part. So first news which is very important from the current affairs national level. So India's first forest university established in which state? So Telangana. Just remember guys, simple sa exam mein form hoga, in which state this first, because this is the first university, that's why it's important. So you can read the some details, important details related to this news. India is going to have its first forest university. So this is the first forest university in which state? Telangana. And previously globally if we will talk, so it will be the third university of the forest after the Russia and China. Okay, so just try to remember the name of the state, and this is the first its kind of university in India. Next one is the INS Vikrant is important news, an indigenous aircraft carrier commissioned by the PM Modi. Okay, so just remember which indigenous aircraft commissioned by the Narendra Modi recently. So INS Vikrant, naam remember rakhna. Okay, so INS Vikrant commission, INS Vikrant, India's first home ground aircraft to be Indian Navy to Cochin shipyard, commissioned by the Prime Minister Narendra Modi. Okay, so that's it. Itna important, at least information aap remember rakho. Next is a very important, India's first lithium cell factory inaugurated in which state? So Andhra Pradesh. Just remember guys, the Minister of the State Electronic and Information Technology Rajiv Chandrasekhar has launched the pre-production run of India's first lithium, because it is the first lithium productions unit. So that's why it's important, manufacturing facility at Tripura, Andhra Pradesh. Okay, so this is also very important news. So just try to remember such type of the news. Just try to cover from the newspaper or if any magazine if you are following. So just सच टाइप ऑफ न्यूज़ को अपडेट करके रखो, यही एग्जाम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, जहाँ पे ऐसे फर्स्ट टाइप के नेशनल लेवल के इंटरेस्ट लेवल का जो भी न्यूज़ होता है, इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, कुछ भी ऐसा इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं. सो दैट इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. नाउ कम टू द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. सो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू विल सी, सो लीज ट्रूज थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम. सो अभी जस्ट वहाँ पे इलेक्शन हुआ. आफ्टर इलेक्शन सी इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ Britain, England. Okay, so just remember her name, as well as possible a question will be formed in this way. Her name will be given. She is a new Prime Minister of Britain, England, and she belong to which political party? इस तरह से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में फॉर्म होते हैं. बेसिकली जब भी ओबामा प्रेसिडेंट हुए तो टिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है. सी बिलोंग टू द कंजर्वेटिव पार्टी. ओके, fifth one is also very important. Alcaraz and Swiatek win the maiden Grand Slam US Open. So all the Grand Slam is important. As per the September point of view, US Open we will discuss, as well as for your exam point of view, all the Grand Slam is important. Just try to remember
हु इज द मेंस कैटेगरी एंड वुमेन्स कैटेगरी के कौन से विनर है. फॉर एग्जांपल यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन. सो ये सारे जो वर्ल्ड के वेल नोन ग्रैंड स्लैम है, इनके मेल एंड फीमेल, इट मीन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी का आपको पता होना चाहिए. बिकम द न्यू वर्ल्ड नंबर 1. ओके, इन द मेंस कैटेगरी स्पेनिश प्लेयर सी अल्क्रेज has lifted the first Grand Slam trophy after the defeating the C Root to become the youngest player to reach the world number 1. So बहुत important है because he won the first time. Okay, and in a female category, Ai Swiatek defeated the debut to win the 2022 US Open women's single title. So both name of the both player is important. So just try to remember. Next one is a City of Markham is the Canada. Name the street after A.R. Rahman. So guys, एक Indian personality के नाम के बेस पे सिटी का नाम रखा गया. So just try to remember. It is a very great achievement for us. Okay, UNDP Human Development Index India rank 132 out of 191 countries. So this data ranking is very important. At the end of the video, I will show you the some other ranking which is most expected for your exam. So just remember, in a Human Development Index, rank of India is a 132. 132 is the rank of India out of 191 country. That is not a good, it's a worse condition you can say. Next one is a King Charles III ascent to the throne of United Kingdom after death of Queen Elizabeth. So he is a new king of England. So related to him, here is some information is given. Just we will try to read to and understand. King Charles III sit on the throne following the passing the Queen Elizabeth II, who had been the longest reigning monarch in British history. And Charles became the rule of the more than dozen independent nation that had previously been British colonies in addition to United Kingdom. So जो भी Commonwealth nations हैं, अब आज भी Commonwealth nation ना, अभी रिसेंटली Commonwealth गेम हुआ. So ये सारे नेशन कभी ना कभी ब्रिटिश रूल में रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ से ब्रिटिश का रूल है भी, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सिर्फ नाम का ही है. ओके, सो इस तरह से ये सारा इंफॉर्मेशन है. सो बेसिकली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर किंग्स चार्ल्स इज अ सेकंड, किंग्स चार्ल्स थर्ड इज अ न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड. ओके, नेक्स्ट वन, आशा पारेख टू bestowed with the 52nd दादा साहब फाल्के award is the most important. दादा साहब फाल्के award, guys, just try to remember all the best movie, best actor, best actress list. And I also given the last my last video is a based on related to the award, Oscar award and Filmfare award and Dada Saheb Phalke award I also covered. So just try to remember these all the film related information. It means film related and it's award related, because when you will see the previous year question of the test, so every year at least 1 or 2 questions related to the movies, it's already covered. So एवरी ईयर, सारे ईयर में कवर होता है. तो इंपॉर्टेंट है आपको फिल्म फेयर एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड एंड अभी इंडियन मूवी शॉर्ट लिस्ट भी होगी ऑस्कर के लिए अगर कोई मूवी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट वन इज अ हिंदी राइटर डॉक्टर असगर वजाहत अवॉर्डेड विद द 31st व्यास सम्मान. व्यास सम्मान एंड अवार्ड सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. सो असगर वजाहत का नाम रिमेंबर करो. नेम ऑफ द प्ले इज महाबली. Vyas Samman is given by the KK Birla Foundation. So these all facts are important. Okay, who is the recipient, what is the name of the play. So play and books and writer वाले पॉइंट से important हो जाता है. And कौन सी institutions को फॉर्म करती है, it's also important. Then 64th Raymond Magsaysay Award is also very very important. लिस्ट में आप रख सकते हो. Raymond Magsaysay Award in 2019, Indian personality Ravish Kumar received the Raymond Magsaysay Award in the journalism field. So यहाँ पे 4 personality के नाम है, सुधारा चीम कंबोडिया, ब्रेंडेड मैड्रिड फिलीपींस, तदासी हतोरी जापान एंड ग्रे बेंजेगिक इंडोनेशिया. So these all are the recipient of 2022 and Raymond Magsaysay is also known as a नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल प्राइज इसको इस तरह से बोलते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया. ओके,
So important है, just remember. Next one is Kumar Sanu, Sailendra Singh, Anand Milind get Lata Mangeshkar Award 2019 to 21. Okay guys, so that is very important. Last year there was one question related to the Lata Mangeshkar Award in the TISS exam. So just try to remember these, all the 3 person, they are recipient of Lata Mangeshkar Award 2019 to 21. It means अगर से वन बाय वन देखोगे तो शैलेंद्र सिंह फॉर द 2019, आनंद मिलिंद फॉर द 2020 and Kumar Sanu for the 2021. Okay, so these all are the recipient of Lata Mangeshkar Award. So important award section से काफी important है. Next one is a Vinesh Phogat from the sports section win the bronze in the World Wrestling Championship. So Vinesh Phogat won the bronze at the World Wrestling Championship 2022 in the women's 53 category. So she is a very well known wrestler, athlete, you can say wrestler of India. So just remember Neeraj Chopra 88.44 meter throw the help him to win the gold in Diamond League. So Diamond League में he won the gold medal. नीरज चोपड़ा से रिलेट करके ये इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करो, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज द 36 नेशनल गेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. 36 national game mascot and anthem launched by the Amit Shah. So Union Minister Amit Shah has launched the mascot of the anthem 36. This the edition is important. 36 national game Trans Stadium Ahmedabad Gujarat में इसका inauguration हुआ है. The mascot is named the Sawaz, which means cub in Gujarat. It means शेर का बच्चा, ऐसा बोलते हैं. The anthem for the national game is based on the theme of Ek Bharat Shresth Bharat. Okay, so these all are fact is important related to the 36th national game inaugurated by the Amit Shah, and in which state? Gujarat state. Okay, World Wrestling Championship 2022, Bajrang Punia won the bronze medal. Okay, so Bajrang Punia is related to the wrestling field. Indian wrestler Bajrang Punia won the bronze medal after defeating the Daulet Nezbek, कजाकिस्तान के बिलोंग करते हैं, तो उनका ये नाम है. द मेंस फ्री स्टाइल 65 कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022. सो बेसिकली वी हैव टू रिमेंबर बजरंग पुनिया, ही ओन द ब्रोंज मेडल. नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश ओन द मैडन सैफ टाइटल, सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2022. गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. सैफ इट्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है? तो जस्ट रिमेंबर दिस टूर्नामेंट is related to the football. Okay, Bangladesh won the first South Asian Football Federation title, SAF Women's Championship 2022, defeating the Nepal. Okay, so that's it. Important है sports section से. Next one is Navteet Saran's latest book, Crimson Spring लॉन्ग लास्टिक फॉर द 2022 JCB प्राइज फॉर द लिटरेचर. सो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द बुक, बुक्स एंड राइटर पॉइंट से आपको रिमेंबर रखना है, बिकॉज इट्स लॉन्ग लिस्टेड फॉर द JCB प्राइज विच इज गिवन इन द लिटरेचर फील्ड. बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, नवजीत सरेन लेटेस्ट बुक क्रिम्सन स्प्रिंग लॉन्ग लिस्टेड फॉर द JCB प्राइज लिटरेचर, स्टार्टेड विद द जलियांवाला बाग मास्कर दैट टुक प्लेस अप्रैल 1399. सो जलियांवाला बाग स्केयर जो एक इंसिडेंट है हिस्ट्री में, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो एंड गोज बैक टू द फोर्थ इन टाइम टू ब्रिंग दैट एरा इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इवेंट लाइव आफ्टर ऑल द स्टेट एंड प्रोलॉग. सो दीज आर द डिटेल इज गिवन. सो for our exam point of view, just name of the books and writer is important. That's it. Just try to remember it. India's economic from Nehru to Modi, a brief history, authored by the Pulare Balakrishnan. So where is the image? I think yes, here is the image. You can see he is a writer. Okay, so from the, what is the name of the book? So India's economic from the Nehru to Modi, a brief history. And this is the written by the Pulare Balakrishnan. So name of the writer, just try to remember. Okay, books and writer point of view. A book title for the metal Nupendra Rao and the Penya story by the Pawan C. Lal. Okay, so here just remember the name of the book and writer. So from September month, these 3 book is expected for your exam. So that's I given. So just try to remember. A journalist Pawan C. Lal has authored the new book for the metal Nupendra Rao and the Penya story, which is set to the release September. The book will be published by the Harper Collins publisher, and this book is focused on how the business is built into the large organization on the foundation of the
वैल्यू एंड सस्टेनेबिलिटी। सो बेसिकली एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है। सो इफ़ एनीवन इज प्लानिंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड कुछ फ्यूचर में स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो, तो दिस बुक मे बी हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन रीड। ओके, बाय द वे, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक्स एंड राइटर। एंड वॉल्कर तुर्क सेट द बिकम द नेक्स्ट UN ह्यूमन राइट चीफ। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन एंड उसकी एजेंसी है ह्यूमन राइट्स which is known as a UNHRC. So United Nations General Assembly approved the Volker Turk, he is from Austria, to be a global body human rights chief by the United Nations Secretary Antonio Guterres. So just remember his name also. Antonio Guterres is a General Secretary, Secretary General of United Nations. Okay. Next one is a senior advocate Mukul Rohtgi to be next Attorney General of India. Attorney General is a very important post in India government. He is a legal advisor of India government. Okay, in case of any legal reply जो भी सुप्रीम कोर्ट के एंड से रहता है, तो he have to reply इस पोजीशन पे जो भी रहता है ना अटॉर्नी जनरल, उसको एज अ लीगल एडवाइजर के साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ से उसको आंसर भी करना पड़ता है। ओके, सो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज सेट टू बी अपॉइंटेड the 14th Attorney General of India. So just remember his name. Previously KK Venugopal the, he is also very famous personality. Next one is a Dr. Rajiv Bal appointed as a new Director General of ICMR. So Indian Council of Medical Research के लिए इनको अपॉइंट किया गया. He is a new Director General. So just remember his name and appointed as a Director General of Indian Council of Medical Research. Next one, Government of India appoint the Lieutenant General Anil Chauhan as a new Chief of Defence Staff. Is also very important appointment related in India government. So Government of India has announced the appointment of Lieutenant General Anil Chauhan retired as the next Chief of Defence Staff. Okay, so these all are the important appointment by the India government which is important for your exam. Nation first ever night sky sanctuary to be set up in Ladakh. So science and technology field से काफी important है. This is the first, that's why it's important. First ever night sky sanctuary will be set up within the next 3 months in a hell. Ladakh Union Minister Science and Technology Jitendra Singh announced. Okay, basically what is it? So basically in night time में this instrument एक टाइप का टेलीस्कोप है, एडवांस टेलीस्कोप है. इट विल कैप्चर द इमेज ऑफ द स्पेस, जो भी स्पेस के इस तरह से प्लैनेट, स्टार्स, इन सब के इमेजेस कलेक्ट करेगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द साइंटिस्ट, स्टूडेंट एज वेल एज इट विल हेल्पफुल फॉर टू इंक्रीज द टूरिज्म ओके इन लद्दाख. सो ये मल्टीपर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ टेलीस्कोप बोल सकते हो एंड नाइट स्काई सेंचुरी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया. नेक्स्ट वन इज Anjikul Cosmos secure the first patent for 3D printed rocket engine. So this is the first patent जो इस टाइप का इंजन है इंडिया में बना है. Anjikul Cosmos, one of the India's private space startup, has secured its first patent for the design and manufacture of the 3D printed rockets. Okay, so just remember the name of the company who given the patent for it. So this is the 3D printed rocket engine. Okay, next one, Hitachi Astemo planted its first solar power plant in India. So again it is a first solar power plant, so that's it important from science and technology point of view. So Hitachi, just remember the name of the company, installed its first India ground mounted solar power plant 3 megawatt at the Jalgaon manufacturing plant. So in which state? So Maharashtra. Okay, next one is a former Tata Sons chairman Cyrus Mistry passed away. It was very sad news. In a road accident he passed away. इनका डेथ हो गया था. So काफ़ी डेंजरस एक्सीडेंट था, उसको न्यूज़ चैनल पे भी आपने देखा होगा. So he is a very famous businessman. So former chairman of the Tata Sons Cyrus Mistry has died road accident while routed from Ahmedabad to Mumbai. So Ahmedabad से मुंबई आ रहे थे. बस just remember the name of him. So he's a very famous personality and businessman. Okay, next one is a Karnataki vocalist TV Shankar Narayanan passed away. Is also very important personality in a art and culture field. So art and culture point of view से इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है. किस एग्जाम में लास्ट ईयर आया था पंडित बिरजू महाराज से रिलेट करके, बिकॉज ही पास्ड अवे इन अ मंथ ऑफ जैन. क्वेश्चन पूछा था पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू विच घराना. ओके, सो
इस टाइप से कनेक्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, इसी तरह से स्टैटिक जीके करंट अफेयर से कनेक्ट होता है। तो ये एक थोड़ा सा शार्प माइंड आपको डेवलप कर लेनी होगी। अगर मेरे कंटिन्यू प्रीवियस वीडियो आप देख रहे हो तो आइडिया लग गया होगा हाउ द स्टैटिक जीके मे बी पॉसिबल कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स। ओके, सो रिनाउंड कर्नाटकी म्यूजिशियन टीवी शंकर नारायण हैज पास्ड अवे, ही वाज 77, ही वाज द टॉर्च बेरर फॉर द माधुरी मानिले स्टाइल कर्नाटकी म्यूजिक। सो ये सब सारे इनसे रिलेटेड करके इंफॉर्मेशन है, जस्ट रिमेंबर हिज नेम। Next important question from the obituary section. So noted historian B. Sheikh Ali passed away. He is a very well known historian जो राइटर्स होते हैं हिस्ट्री के। नोटेड हिस्टोरियन एंड फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मंगलोर एंड गोवा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बी शेख अली पास्ड अवे। ही वाज द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। तो ये सब सारे इनके अचीवमेंट हैं, जस्ट रिमेंबर हिज नेम, ऑबिचुरी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। देन come to the miscellaneous type of the question. So world largest, this is the world largest temple open at Noida, West Bengal. The world largest religious monument is expected to cost $100 million and replace the Cambodia 400 acres large Angkor Wat temple complex. So this is a world largest temple. Where is it? In West Bengal, just remember. Next one is a Odisha Nukai festival celebrated in western Odisha. So Nuakai festival, it's called the Nuakai festival. So this festival belong to which state? Simply the question may be framed कि Nuakai festival belong to which state? So it's belong to Odisha state. That's it. By the way, for your knowledge, you can read Nuakai, an agrarian festival was celebrated on 1st September 2022 as a western Odisha. It is also referred as the Nuakai भेंट घाट और नुआकाई पर्व, जिसको पर्व बोलते हैं। द वर्ड नुआ मीन्स न्यू एंड काई मीन्स फूड। इट मीन्स नेम इटसेल्फ डिपिक्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द क्रॉप फेस्टिवल। ओके, सो बेसिकली नुआकाई फेस्टिवल, जस्ट रिमेंबर, इज अ बिलोंग टू उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट वन इज अ global innovation index. Indexes is very important. So in a global innovation index, rank of India is here you can see rank of India is a 40. And which one is the top country? Switzerland, United States, Sweden, United Kingdom and Netherlands. These all our country are on a 5th position. First one is important for your exam, that's it. और कोई important नहीं होता. First one is important and the rank of India, that's it. इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। रैंक ऑफ इंडिया इज 40। बाय द वे नेबरिंग कंट्री चाइना का 40 है, श्रीलंका 85 है, पाकिस्तान 87 है, बांग्लादेश 80, 102 है। ओके, and similarly one more important index, human development index. This is a highly expected. Okay, so in a human development index, rank of India is a 130, as I already shown you in a previous slide. And which one is the top? Switzerland, Norway, Ireland, Hong Kong, Austria. These all are country on a top position. Rank of India is a 132. Neighboring country China, Bhutan, Bangladesh, here you can see 79, 127, 129, 161. Rank of Pakistan in the human development index. Basically human development index is what is the standard of living of the people. It means how they are skillful, what is the education level, life expectancy. ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया गया है। सो इस बेसिस पे वर्ल्ड में सबसे टॉप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉलेज वाइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, इट मीन्स स्ट्रेसफुल लाइफ है, मतलब बहुत सारी पैरामीटर्स है। सो उस बेसिस पे जो पीपल बिलोंग टू स्विट्जरलैंड, दे आर ऑन अ टॉप पोजीशन। ओके, सो उस रैंक में हम अभी बहुत लोअर पोजीशन पे हैं। सो ठीक है, वी विल ग्रेजुअली डेवलप। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडी ना, हम लोग कंटिन्यू इसीलिए तो स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि वी विल चेंज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एवरीथिंग वी विल चेंज। ओके, एंड वी विल चेंज आवर नेशन ऑल्सो। हमारे नेशन का भी रैंक हम इम्प्रूव करेंगे इन ऑल टर्म्स। अभी जितने भी वर्स्ट कंडीशन में इंडिया का रैंक आता है सबसे टॉप पे, बट वेरी सून अगर से हम वी विल टेक द गुड डिसीजन, सो डेफिनेटली वी कैन चेंज इट। ओके गाइज, सो फॉर टेस्टनेट अगेन हियर आई विल inform you, if you are seriously planning for the TISNET 2023, so you can inquire for the live class, classroom, books, mock tests and interview. So complete dedicated material you will get to crack this exam. And if you want this PDF, जो यहाँ पे हमने already सारे discuss किया, if you want this PDF, so you can download link is given in the description part, so you can download this PPT, so that will be helpful for you to revise if you want. But this is not a complete information from the September month.
such type of news is expected. Okay, so that is given only for the hint purpose कि at least you will get the idea. ये भी important है, no doubt important है, expected है, but ऐसे और भी बहुत सारे सितंबर मंथ से नियर बाई 100 important news है which is most expected for your exam, as well as one good news. Very soon I'm coming with the top 100 question series, so you will get it, जो कि MCQ फॉर्मेट में होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड होगा. सो उस पैटर्न, उस सीरीज को भी देखना. एंड कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क. एंड इसमें भी कोई भी डाउट एंड कोई क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड सारे कुछ मिल जाते हैं. एंड you can follow us on a social media, Facebook, Instagram and Telegram, and link से download कर लेना, उसको नहीं भूलना. Okay guys, so see you next session very soon with latest content and expected for your exams. चलो bye bye and जय हिंद.